टाइम क्या देखा था हमने? What did we see last time? याद है टॉपिक किसी को? सर बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम था क्या? ओके, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम? समझ में कितने लोग को समझ में नहीं आया? I want to see hands. कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? पक्का? अच्छी बात है, फिर सबको समझ में आ गया तो देन आई एम हैप्पी। नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। है किसी को कुछ डाउट है किसी को? Okay, so this was the boiling point diagram, right? So what we are doing is we are plotting temperature on the y-axis versus mole fraction of the more volatile component on the x-axis. What is more volatile component? More volatile component क्या रहता है, मतलब क्या उसका? लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका मोल फ्रैक्शन प्लॉट कर रहे हैं, और वो x एंड y, x is for liquid phase and y is for the vapor phase. तो x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है, x y है of more boiling component, y एक्सिस पर टेम्परेचर है. And if you see this, temperature of A is lower than temperature of B, boiling point, right? When you say mole fraction is of A is 1, that means it is pure A और उसका boiling point कम है. When mole fraction of A is 0, right? When mole fraction of A is 0, यहाँ पर इस कॉर्नर में, तो उसका boiling point नहीं, उसमें B is 1, right? A is 0 means B is 1, so that is boiling point of B इस साइड में कॉर्नर में, right? और बीच में जो है that's a boiling point curve. उसमें ऊपर का कर्व है TY कर्व, that means temperature versus mole fraction in the Y vapor phase. This is also called dew point curve. और नीचे वाला जो है that is TX curve, that means temperature versus mole fraction in the liquid phase. This is also called the bubble point curve. Why is it called bubble point curve and dew point curve? Who can explain? Bubble point curve और dew point curve का मतलब क्या है? किसी को याद नहीं है? बबल पॉइंट क्या होता है? What is bubble point? Nobody remembers what is bubble point, is it? Boil point of mixture. Not the boiling point of mixture. मिक्सचर का कभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मैं पहले बोला था. देयर इज नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. देयर इज अ बबल पॉइंट एंड देयर इज अ ड्यू पॉइंट फॉर अ सॉल्यूशन. व्हाट इज बबल पॉइंट? अभिषेक कुंबाड़े, लास्ट टाइम बताया था मैंने.
Sir, it is the Abhishek, point at which first bubble starts. first bubble, when you start increasing temperature of a solution, which may contain two components, is a temperature, which is the first bubble starts forming. That means it is completely liquid, पूरा लिक्विड फेज में है, सिर्फ फर्स्ट बबल फॉर्म होना शुरू हुआ. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड टी एक्स कर्व, बबल पॉइंट कर्व. वहाँ पर पूरा लिक्विड ही रहता है, सिर्फ फर्स्ट बबल फॉर्म होना शुरू हुआ. टी एक्स मीन्स टेम्परेचर वर्सेस मोर फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज. बबल पॉइंट पर इट इज ऑल कंप्लीटली लिक्विड. जो सोल्यूशन रहेगा इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इसका कंप्लीटली लिक्विड है, सिर्फ फर्स्ट बबल फॉर्म होना शुरू हुआ है. उसके पहले पूरा लिक्विड रहता है. बबल पॉइंट से बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, वेपर्स बढ़ते जाता है. Okay, see, that is why it is called Tx curve, or T versus more fraction in the liquid phase. And as we increase the temperature from, if I take this line and increase the temperature, लिक्विड है ये, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आया तो बी पर बबल पॉइंट आएगा, फर्स्ट बबल आएगा. उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इट विल बी मिक्सचर ऑफ लिक्विड वेपर्स बढ़ते जाएगा. तो बीच में जो है जैसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर यहाँ पर. And then at the dew point curve, it becomes all vapor. It is completely vaporized at dew point. So it boils between bubble point and dew point. Bubble point where it is 100% liquid, dew point where it is 100% vapor. And what is dew point definition? Who can tell me? First drop of liquid form. First drop of liquid. So if I take the vapor ऊपर से और उसको कूल करता हूँ मैं, कंप्लीट वेपर है, 100% वेपर है, उसको जैसे कूल करूँगा मैं, इफ आई कूल इट, the first drop of liquid will form at dew point. So it is completely vapor at the dew point, only first drop of liquid is formed. So any liquid will condense between dew point and bubble point. जब कंडेंसेशन होता है, वेपर लेके हम कंडेंस करते हैं, हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करेंगे आप, तो इट इज ऑलवेज कंडेंस बिटवीन ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट. वो रेंज में पूरा कंडेंस होगा. और जब बॉयल करेंगे कोई लिक्विड, व्हेन यू बॉयल लिक्विड और सॉल्यूशन, इट विल इवेपोरेट और फॉर्म वेपर बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट. देयर इज नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन. देयर इज अ रेंज इन विच इट बॉइल्स, which is always between the boiling point of pure A and the boiling point of pure B, and it changes with composition. Right? If I change the composition of the liquid x-axis पर, तो मेरा बबल पॉइंट चेंज होगा, ड्यू पॉइंट चेंज होगा. सर या सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर और बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट में क्या डिफरेंस है? देयर इज नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. मैं पहले भी बोला था, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ. There is no boiling point of a solution. There is a bubble point and the dew point. It is called a boiling point diagram because it shows किस range में boil होता है solution. Right? किस range में evaporate होता है solution. It always evaporates starts evaporating at bubble point and it forms complete vapor at dew point. Water लिया, pure water लिया, तो it will evaporate at 100 degrees and there is no bubble point and dew point for water. It is same because it is pure water. But if I add water and ethanol, it will boil between boiling point of ethanol and boiling point of water, and it will depend on the composition of ethanol in water. Understood? Yes sir. Yes, sir. Okay. So if you take any point here in this vertical line which I am taking, if I take liquid and keep boiling, if I take any point E, right, at this point E, if I condense that vapor, whatever is a mixture of liquid and vapor, I'll get a liquid whose composition is given by D, which is on Tx diagram, and vapor whose composition is given by F.
So it is mixture of liquid and vapor. तो liquid का composition रहेगा D and vapor composition रहेगा F. That means D will be like this. This is D composition and this is F composition, vapor composition. Liquid composition अलग रहेगा, vapor composition अलग रहेगा, right? And that is the principle of distillation. When you boil a mixture, the liquid will have less of more volatile component, यानी more volatile component कम रहेगा liquid में और vapor में ज़्यादा रहेगा, right? Because D का composition is less यहाँ पर है और F का composition यहाँ पर है, right? So अगर हमने boil किया liquid, so it will form a liquid and vapor, where vapor will have more of lower boiling component and liquid will have less of lower boiling component, and that will help to separate the lower boiling component. तो वेपर को कंडेंस किया तो हमारे को ज़्यादा रिच लो बॉइलिंग कंपोनेंट मिलेगा, लिक्विड में ज़्यादा रिच हाई बॉइलिंग कंपोनेंट रहेगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन. Is this understood? Yes, sir. Okay, so let's see. Let's proceed further now. And the amount of liquid and vapor at this point E is the ratio of lever arm principle EF divided by D. ये liquid है तो ऊपर का quantity EF रहेगा opposite to that towards the vapor side, and amount of vapor is lever arm towards liquid side like D. That's how you can get the amount of vapor and liquid. Okay, so that is a TXY diagram or boiling point diagram, and if you take any point here, जैसे ये हमने लिया राइट, ये पॉइंट लिया D और E, D और F सॉरी, E लिया तो लिक्विड विद D है, वेपर F है. If you plot this on X and Y diagram, liquid and vapor, so we'll get this curve. Which shows Y on the y-axis, that means vapor composition in equilibrium with the liquid composition, and X on the x-axis. If I take any liquid and boil it or increase the temperature, and if the liquid composition is given by this composition, the vapor composition is given by, if I take it vertically here and then take it like this, so this is the vapor composition, right? So liquid will always have less of more volatile component, vapor will always have more of more volatile component. If you see this, if this is 0.6, this will be say 0.8, and this is always XA, means it is more volatile component. We are always plotting a more volatile component, more fraction. XA is more fraction of more volatile component in the liquid phase, and Y is more fraction of more volatile component in the vapor phase. So this is called equilibrium diagram because it shows at equilibrium what is the composition of liquid and what is the composition of the vapor in equilibrium with the liquid. Any point if you take here, it will tell what is the vapor composition, what is the liquid composition. On the y-axis you will get vapor composition, on the x-axis you will get liquid composition in equilibrium with that vapor. Any questions on equilibrium diagram? सर हम लोग टाई लाइन क्या वो ग्राफ के वो कर्व के अंदर ड्रॉ करते हैं. Tie line is here, right? यहाँ tie line बताया था मैंने, right? Tie line is any line which is connecting the liquid TX curve and TY curve. ये बताया ना, point E लिया हमने, so that will give in result into liquid of composition D and vapor of composition F, right? That is the tie line. If I plot that same thing here on the XY diagram, that is some point P. Vapor composition on y-axis, liquid composition x-axis. That is, tie line is one point on the equilibrium diagram. If I take any point here, essentially, if I take any point
on equilibrium diagram, that is the tie line on the TXY diagram. TXY diagram में temperature x और y रहता है, राइट? So यहाँ पर temperature plot नहीं कर रहे, we are plotting only x and y because we are saying it is a constant pressure and temperature is, we are not plotting temperature here basically, y and x. So any tie line is essentially one point on the equilibrium diagram. Any Sir, questions? what does it tie line? What does it denote? It says if I take a liquid of composition say point x, 0.6 यहाँ पर दिखाया मैंने, right? And increase its temperature at equilibrium, the vapor composition will be 0.8. The liquid composition will be 0.6, vapor composition will be 0.8 in equilibrium with the liquid. That's what it says. Because it's a pure, it's a solution, more volatile component vapor में ज़्यादा रहेगा, liquid में कम रहेगा as the temperature is increased. Okay. Sir, diagonal. Diagonal is x equal to y. Diagonal is just to show कि it is same thing, vapor equal to liquid composition, which possible नहीं होता है. It's just drawn to show कि vapor is having more light component than the liquid phase. Diagonal is x equal to y, right? If I take any point on the diagonal, it says x equal to y. It's just shown for Sir, reference. वो TXY डायग्राम की हेल्प से हम वो इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? Yes, वही बताया मैंने अभी आपको कि if you take any tie line on the TXY diagram, that will become one point on the equilibrium diagram, because TXY diagram shows temperature on the y-axis, and if I take a tie line, x मिलता है यहाँ पर d का, d gives me x value and f gives me y value in equilibrium with x. So y, if I take this x value, d का value and y from f का value, that is essentially one point on this equilibrium diagram. Okay. Any questions? Okay, there are no questions. Then let us proceed. Let me undo all this drawing. ठीक है, इससे ज़्यादा undo नहीं होता है, बट ठीक है, काफ़ी हो गया. Because I want to keep the notes clean. Okay. ठीक है. So next we will see what is the effect of pressure on TXY diagram. You see TXY diagram. Now if you change the pressure, what happens to TXY diagram? If you plot temperature on the y-axis and x and y on the x-axis of again more volatile component, हमने P1 देखा था, right? We have seen this thing P1 at say atmospheric pressure. As you increase the pressure, what will happen is it will become contract. It will contract, and at very high pressure, near critical temperature, it will become very close to each other. So as you increase the pressure, as the pressure is increased, the TXY diagram will contract, or at critical point it will be, there is no difference. So it will keep changing like this depending on what is the pressure of the system. Essentially this is observed behavior. So just remember this thing, if pressure बढ़ा है तो
जो टी एक्स वाई डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड एट क्रिटिकल पॉइंट इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर. Okay, so same thing, effect of pressure on equilibrium diagram. If you plot y versus x, so if you plot this thing, जैसे pressure बढ़ेगा, if you increase the pressure P1 से P2 से P3 P4 P5, then it becomes rather it contracts, और P3 जो है जहाँ जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए. दैट इज मैक्सिमम. उसके बाद जो आता है कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है. द प्रेशर इज अबव क्रिटिकल प्रेशर. सेम थिंग जो हमने टी एक्स वाई में देखा, वी आर रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई डायग्राम. इसका इतना अपने यूज़ नहीं है अपने यहाँ. वी डोंट यूज इट मच इन आवर थ्योरी, बट समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम डायग्राम, राइट अ नोट ऑन इट. तो ये डायग्राम बताने का और एक्सप्लेन करने का, ज़्यादा नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज बेसिकली यूज्ड हाई प्रेशर के लिए देखा था ना हमने, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इक्वेशन डेराइव किया था ना हाई प्रेशर के लिए हमने, याद है किसी को? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन राउट्स लॉ और लूज विस्कोसिटी रूल डिराइव किया था ना हमने, नहीं याद है किसी को? ठीक है, नहीं याद है तो घर जाके देख लेना. At least you should remember the names. If you are here for a class, you should know at least some names. पॉइंटिंग करेक्शन फैक्टर याद है किसी को? हेलो, यस सर. व्हाट इज पॉइंटिंग करेक्शन फैक्टर? सर वो हाई जब हम डिराइव किया था हाई प्रेशर पे रिलेशन. वही तो पूछ रहा था मैं. पॉइंटिंग करेक्शन फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन VLE. दैट्स व्हाट वी आर शोइंग हियर. Okay, so let us look at constant temperature equilibrium now. वो constant pressure था when we looked at this one. This diagram was constant pressure. TXY diagram. Temperature was changing, X was changing, Y was changing, right? Now we are going to look at constant temperature equilibrium. If you keep only the temperature constant, what happens to the pressure? So we plot pressure on the y-axis versus mole fraction in the liquid phase and vapor phase on the x-axis, and that is again for more volatile component. A is more volatile, so we get this kind of curve where PAS, what is PAS and PBS? Saturation Saturation pressure. pressure. Saturation pressure of A and saturation pressure of B, right? So if you see at x equal to 1, that means it is pure A, you get saturation pressure of A, PS. And at x equal to 0, that means pure B, xB is 1, xa is 0, it is saturation pressure of B, right? And what we see is, which is higher? PAS is higher or PBS is higher? PS, PAS. Why? because for more volatile component, vapor pressure is more because boiling point is less. Yes, boiling point is less. That's why the vapor pressure is more for the more volatile component. Okay. So if you see this, यहाँ पर जो है दो कर्व है, ऊपर वाला नीचे वाला, again similar to TXY curve.
यहाँ पर ऊपर वाला है पी एक्स कर्व, नीचे वाला है पी वाई कर्व। टी एक्स वाई में क्या था, व्हाट वाज टी एक्स वाई, ऊपर वाला कौन सा था टी एक्स वाई में, वेपर वाला कौन सा? ऊपर जो था वो वेपर का था और नीचे लिक्विड का कर। टी एक्स वाई में ऊपर वाला वेपर वाला था, नीचे वाला लिक्विड वाला था। यहाँ पर उल्टा है, नीचे वाला वेपर वाला है पी वाई कर्व और ऊपर वाला पी एक्स कर्व है। नाउ यू प्लॉटिंग वेपर प्रेशर, यू नॉट पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर बोलो। Okay, similar to that only. So if you start with the liquid from here, suppose I take the liquid, okay, and start increasing, okay, so if I start reducing the pressure, right, ये नीचे कर रहा है ना, pressure reduce कर रहा है, right, y axis में pressure है. So if I take say at 1 atmosphere and start reducing the pressure, so what will happen is it will start evaporating, and it will start evaporating at point D. वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे हम, we were increasing the temperature and first bubble was appearing. Now if you take a liquid and start reducing the pressure, whatever pressure it is, if it is 5 atmosphere, reduce it to 1 atmosphere or 2 atmospheres. So if I start reducing the pressure, because at lower pressure the boiling point is less, vapor pressure is also less, तो बबल पॉइंट हो जाएगा, आई मीन बबल्स फॉर्म करना शुरू हो जाएगा, एंड एट पॉइंट डी द फर्स्ट बबल विल फॉर्म. Okay, so that is why upper one is px curve, pressure and more fraction of the liquid phase. And as we start reducing the pressure more and more from D to E to F, the more and more liquid will start evaporating, and at point F it will be completely vaporized. So point F is actually the dew point of that mixture. So D is the bubble point and F is the dew point. And the lower curve is similar to that one, it is P Y curve, so pressure versus mole fraction in the Y phase, and it's called dew point curve. समझ में आया ये? Similar to temp Txy, but instead of increasing the temperature, what you are doing, you are reducing the pressure if you take a liquid mixture. Any questions on this part? Okay, there are no questions. Then if you take, similar to that only, if you take a vapor and start increasing the pressure from below, at some point F, the first drop of liquid will appear. That means vapor will start condensing. First drop of liquid will appear, and that is again dew point curve. That's why Py curve is dew point curve. And we again, if we increase the pressure further, more and more liquid will be formed, and at point D it will be completely condensed. It will be all liquid. So that is a bubble point curve. And if we take any point E in between these two, because in between this dew point bubble point is liquid and vapor mixture, if I take any point E on this curve, on this line, it will give me a vapor with composition given by B and a liquid with composition given by E. Is this understood? Exactly similar to XY curve. The only thing is we are playing with the pressure now instead of temperature, changing the pressure. And amount of liquid to amount of vapor again by the same lever arm principle is given by EB upon AE. Any questions, doubts on this diagram?
constant temperature equilibrium is called PXY diagram. Should be PXY diagram. So pressure versus XY. Just like TXY diagram, temperature versus XY. Here we are plotting pressure versus XY. Any questions? सर Yeah. सर तो बहुत कम प्रेशर पे मेरी वेपर सुपर हीटेड होगी क्या? बहुत कम. Yes. वो similar to temperature, right? Temperature बढ़ा आया या pressure reduce का effect is same. जैसे हमने बताया था कि हिमालय पे क्या होगा, बॉयल होगा का पानी, कितने टेम्परेचर बॉयल होगा. यहाँ असाइनमेंट दिया था मैंने, होमवर्क, राइट? आप लोगों को बोला था घर जाके देखो हिमालय पे क्या प्रेशर रहता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है वाटर का. किसी ने किया क्या? नोबडी हैज डन इट, राइट? क्योंकि आप लोग आते हो यहाँ पर बैठते हो और घर जाते हो, राइट? यू डोंट डू एनीथिंग. These concepts are not easy. Thermo is not easy to understand and remember. So if you just come and sit here and then just don't do anything, it can do vaporize. पहले ही बोला था मैंने, you have to put in effort, more effort in thermo to understand the concepts. अभी भी टाइम है, घर जाके देखो कि प्रेशर रिड्यूस किया तो कैसे होता है, वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है. यस सर हिमालय पे अगर गए हम तो ऊपर प्रेशर कम होगा ना? हाँ, प्रेशर कम रहता है ना. हाँ तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. कम घर होगा. जाके होमवर्क रिड्यूस होगा ना. रिड्यूस होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाय बनेगी क्या? चाय गर्म होती है ना. अगर आपको 25-30 डिग्री पे चाय दिया तो क्या गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा? तो गो होम एंड डू दिस होमवर्क एंड कन्विंस योरसेल्फ कि प्रेशर रिड्यूस हुआ तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे. आई नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू. ओके, ठीक है. कुछ क्वेश्चन है इस पे? बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा ना. हाँ, क्या बोल रहे हैं? कम टेम्परेचर पर ही वहाँ हिमालय पे बॉल हो जाएगा ना. हाँ, तो चाय बनेगी क्या? चाय बना सकते हैं, क्या टेम्परेचर बॉयल हो गया तो क्या हो जाएगा, पानी का क्या हो जाएगा? पर फिर नहीं सर बनेगी. 50 डिग्री, हेलो 50 सर, अगर प्रेशर डिग्री. कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ना? कौन बोल रहा है ये? किसने बोला ये? सॉरी सर, देवेंद्र. Devendra, when you reduce the pressure, the boiling point reduces. हाँ तो मतलब वो पानी तो निकल जाएगा, तो वो नहीं समझा कि पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो चाय कैसे बनेगा? चाय कितने टेम्परेचर पे रहता है? What is the temperature of tea which you drink? 100 100 रहता है. पी सकते हैं क्या 100 डिग्री से वाला चाय? मुंह जल जाएगा. सर वाटर बॉईल होता है ना वहाँ पे. अरे वाटर बॉयल होता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री से रहता है क्या? पूरा मुंह जल जाएगा 100 डिग्री पे चाय पियोगे तो. पी सकते हैं एकदम बॉइलिंग वाटर के, बॉइलिंग चाय? नहीं सर. सर थोड़ा कम होता है. थोड़ा कम ही रहता है, राइट? 70-80 डिग्री रहेगा, राइट? अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग चाय बनेगा क्या?
नहीं कितना बनेगा। गर्म रहेगा चाय? वो जल्दी ठंडा हो जाएगा ना। ठंडा नहीं हो जाएगा, पानी पानी इवेपोरेट हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस कर पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा उसमें? अच्छा, टोल्ड यू डू एन एक्सरसाइज, घर जाके देखो कि हिमालय पे प्रेशर कितना रहता है, या हाइट जैसे हाइट बढ़ता है प्रेशर कैसे होता है, कितना कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है। ठीक है, करो ये आप, सी द इफेक्ट। So any questions on PXY diagram? Let me remove all this. Okay. So ये हो गया temperature PXY diagram. Again, similar to TXY diagram, there is the effect of temperature on PXY diagram. Similar to that. So if we increase the temperature, what happens? So ये जो curve होता है change होता है, contract होते जाता है, and it depends on the critical temperature of more volatile component. If temperature is less than the critical temperature of more volatile component, then it's normal. Our temperature is more than critical temperature of less volatile component, तो contract होते जाता है। Okay, so let us look at this one now. So any questions on these diagrams before we move to the next topic? Effect of temperature pressure is just I think a short note आता है कभी भी, but you need to understand PXY and TXY. That is what we'll be using throughout. We actually create, there are some problems which are given for actually drawing PXY diagram and TXY diagram. We'll see that. Okay, if there are no questions, then let us move to the next topic. Actual applications, how we are actually going to use all this basis for calculating VLE. So VLE in ideal solutions, again we start from ideal solutions. We always start with simple case where we assume the vapor is ideal gas and the liquid is ideal solution. And we can use the pure component properties. Vapor pressure कैसे find करते हैं हम pure component का? By using Anton equation. Yes, by using Anton equation we can find the vapor pressure, right? So if you assume the liquid is assumed as ideal solution and vapor as ideal gas, VLE can be estimated without experiments because we have equations for calculating vapor pressure, and we'll see what to do, how to do it. So characteristics of ideal solution is chemicals are similar, right? Methanol, ethanol, heptane, hexane, solutions like these, we are like ideal solutions. Then we have seen ideal solution by definition, there is no volume change on mixing, that means delta V is equal to 0. No enthalpy change on mixing, we have seen this also, that means delta H is equal to 0. And the components follow Raoult's law. We have seen this also, right? So Pi bar is equal to Xi PIS. That means Pi bar is nothing but Yi into total pressure is equal to Xi PIS. So if you know the vapor pressure PIS and if you know the total pressure P, we can calculate Y for any value of X. In this equation, if you know PIS and if you know the total pressure,
then for any given value of x, suppose you assume value of x is 0.1, you can find what is the value of y, which is in equilibrium with liquid. So that is your equilibrium diagram, y-x diagram मिल जाएगा हमारे को, जो हमने देखा था अभी, राइट? समझ में आया इक्वेशन 2 कैसे यूज करने का? Any questions on how to use equation 2? We'll see the examples, but any questions how we are going to use equation 2? Okay, there are no questions. Good. Okay. So for a binary system, we know that P1 bar, or partial pressure of component 1, is equal to x1 into P1s. Applying this Raoult's law, equation 1, P1 bar is equal to x1 into P1s, and P2 bar is equal to x2 into P2s. And total pressure is nothing but summation of partial pressures by Raoult's law, right? So we can say P is equal to P1 bar plus P2 bar. And if we substitute for P1 bar and P2 bar, you get x1 P1s plus x2 P2s. And if you write x2 in terms of x1, x2 is equal to 1 minus x1 because it's a binary system. So P is equal to x1 P1s plus 1 minus x1 into P2s. And if we bring out combine x1 terms, we'll get P is equal to P2s plus P2s minus P1s into x1. So equation 3, any questions on equation 3? We're just adding partial pressure of component 1 and component 2 to get total pressure. So this says, if you look at this one, total pressure over an ideal solution is a linear function of composite. So if you plot this one, essentially what it means is, if I plot pressure versus x1, what kind of curve I'll get? क्या मिलेगा? यहाँ somebody कौन है वो वाला present? Nupur. Nupur Upadhyay, can you hear me? Nupur, can you hear me? No. If you don't hear me, if you don't respond, that means you are not paying attention. Shivani? Yes, sir. So if I plot equation 3, if I want to plot equation 3 and I want to plot y-axis pressure, total pressure, and x-axis x1, what kind of curve I'll get? The straight line Straight line. कैसे रहेगा straight line? origin. Origin से जाएगा. नहीं ऐसा sorry sir. Y axis कट कर. हाँ? Y intercept कट करके आएगा मतलब. Y-intercept पे क्या आएगा? हाँ. What is y-intercept? P2s. P2s. Good.
So y-intercept is going to P2x. It is basically y equal to mx plus c, right? M is P2 minus P1. P2s minus P1s. एक मिनट आखिरी लगा रखा है। Okay, so if I plot this equation 3, it's essentially y equal to mx plus c. M is nothing but P2s minus P1s, that is the slope, and P2s is the intercept. Right? That means the total pressure over any ideal solution is a linear function of composition. समझ में आया लोगों को? सर वो आवाज थोड़ी कम हो रही है सर। आवाज कम हो रही है। ओके, अभी आ रहा है आवाज? Can you hear now? Yes, sir. Okay, so video बंद कर दिया मैंने. That takes a lot of bandwidth. So essentially, if you plot P2 equation 3, one y-axis is total pressure and x-axis is x1. So you get a straight line with intercept is equal to P2s and slope is equal to P2s minus P1s. समझ में आया ये? यस सर। Okay. So this is a essentially linear correlation. That's what it says. It's a linear function of the composition. Okay. So now if you plot this one, this is pressure versus x1 y1 है, right? ये हमने देखा था P1s P2s लिया था, Px कर्व and Py कर्व, right? तो ये जो इक्वेशन हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया ये वाला, this is P1 bar and this one is P2 bar. Why is that? How do you say this is P1 bar and P2 bar? P1 bar का इक्वेशन क्या है? What is P1 bar equal to? And what is P2 bar equal to? याद है किसी को? क्या देखा था हमने? X into PIS. Yes. P1 bar is nothing but x1 into P1s and P2 bar is nothing but x2 into P2s, right? So x1 into P1s, this is x2 into P2s, right? So I am taking this y-axis is pressure है या partial pressure भी हो सकता है, and x-axis पे x1 है, right? So if I take P1s इसे लिया, right? ये P1s है. At x equal to 1, बराबर? At x equal to 1, what is P1 bar? P1S. P1s, right? बराबर है? So and x equal to 0, 0. 0, right? So at x equal to 0, P1 bar is equal to 0 by this equation, and at x equal to 1, P1 bar is equal to P. P1s, ठीक है? So this gives straight line, बराबर है? समझ में आया वो P1 bar कैसे होगा डॉटेड लाइन ब्लू वाला? Similarly, if you take at x1 है, x1 है, and suppose I take x2 equal to 0, so P2 bar क्या हो जाएगा? x2 equal to 0 means 0. x1 equal to x2 equal to 0,
तो 0 हो जाएगा, राइट? या करेक्ट. सो एट x2 इक्वल टू 1 P2 बार क्या हो जाएगा? P2S. राइट. सो P2S एंड 0 ये दो लाइन ड्रॉ हो जाएगा. दैट इज P2 बार. समझ में आया? P1 बार P2 बार हमें ये कैसे आया? This straight line which you draw from 0 to P1S is nothing but P1 bar, and the straight line which you draw from P2S to 1, this is x1, right? So x2 क्या हो जाएगा? If you plot say x2, 0 हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, right? So that is what is P1 bar and P2 bar. Any doubts on questions on that? सर वो लाइन क्या इंडिकेट दोनों? Partial pressure of 1 and partial pressure of 2. वही what is P1 bar and what is P2 bar? P1 bar का definition क्या है? यस सर. It is partial pressure of component 1. P2 bar is partial pressure of component 2. Equation देखा था ना हमने. P1 bar is nothing but x1 P1s. So it is essentially a linear function, right? Partial pressure is a linear function of composition. Same thing हमने ऊपर बताया था. But there was a different way of showing it. यहाँ पर ऐसे बताया था total pressure के लिए. But partial pressure is also a linear function of composition. ठीक है? Any questions on what we have seen today? We'll see how to draw these diagrams tomorrow. But today understand the concepts. Px, Pxy curve, Pxy curve, equilibrium diagram, etc., etc. Okay, there are no questions. I'll stop the recording.